नमस्कार दोस्तों, अक्सर एजुकेशन हम में आपका फिर से स्वागत है। हमारा ये जो वीडियो है दैट इज नाउन्स इन इंग्लिश पार्ट 2। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, लेट अस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अक्षर एजुकेशन हब फॉर सच एक्साइटिंग वीडियोस। हमने हमारे अगले वीडियो में देखा है कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स. We have differentiate them as common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun, collective noun, compound noun and material noun. इस वीडियो में हम 3 नाउन को समझने का प्रयत्न करेंगे, दैट इज काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मटेरियल नाउन. चलिए देखते हैं व्हाट आर द काउंटेबल नाउन्स. Countable nouns are the nouns that can be counted are called countable. जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5. जिस नाउन को, जिस संज्ञा को हम गिन सकेंगे that is known as the countable noun. For example, book, sparrow, table, house, car, boy, teacher, apple, bike. These are the nouns or such things which can be counted, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं. These nouns are called countable nouns. Let's see some of the examples for the countable nouns. First, Maitri purchased a book last week. So a book यानी एक book. So this is countable noun. Our society has 100 bungalows. So bungalows can be counted 100. So it's countable noun. 7 boys are selected for annual day drama. So boys are countable noun. 3 chairs are missing from the prayer hall. So chairs are countable. Now let us see what are known as the uncountable nouns. Nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे गिनती नहीं है, उसको हम अनकाउंटेबल बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, sugar, water, grains, petrol, ink, butter, oil, air. These are the uncountable nouns. These are the examples for the uncountable noun. We generally measure these things either in liter or in kilograms, but we cannot count them in numbers. 1, 2, 3. No, we cannot count them. These are measured. These are the mass. So we call them uncountable nouns. Let's see some of the examples for the uncountable nouns. First, Rinal bought a liter of milk. Shyam wants some sugar. Children like to eat cake. Petrol catches fire. तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंसेस में मिल्क है, सुगर है, केक है, पेट्रोल है, these are known as the uncountable noun. Now there are some important points to remember for the uncountable noun. First, all the material nouns and abstract nouns are uncountable. जो material noun है और uncountable abstract noun है, वो सभी uncountable noun का एक प्रकार है. क्योंकि abstract noun है, हमने हमारे अगले वीडियो में समझा है कि abstract noun है, उससे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, we can just feel in, we cannot count them. So these are uncountable noun. Material noun इसी वीडियो में हम आगे जाके देखने वाले हैं मटेरियल नाउन क्या है. तो वो मटेरियल नाउन भी सभी अनकाउंटेबल में होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाउन है, दे कैन बी यूज्ड बोथ एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट दे हैव बीन यूज्ड. वो जो कंटेक्स्ट में यूज हुए हैं, उस कंटेक्स्ट के आधार पर इसे हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I want 2 cakes. Now when I say I want 2 cakes,
I want 2 different cakes. हमें 2 केक चाहिए. So here cake is a countable noun. But when I say she ate a piece of cake, piece of cake यानी पूरा केक उसमें से थोड़ा खा, तो at that place cake is an uncountable noun. When I say 2 chocolates, so when I say 2 chocolates, chocolates are a countable noun. But when I say I ate a bar of chocolate, तो उसमें chocolate uncountable हो गया. So these are some of the nouns which can be either countable or uncountable depending upon the context they have been used. वो किस परिस्थिति में उसका उपयोग हुआ है, उसके आधार पर वो countable है या uncountable है, उसका निर्णय किया जाएगा. अभी देखते हैं कि इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. What is the difference between countable noun and uncountable noun? यहाँ टाइप लिखा है, टाइप पे लिखा है countable noun. Countable noun is a name of separate people, object or idea. For example, doctor, door, hour. We can count them: a doctor, a door, 1 doctor, 2 doctor, an hour, 2 hours. So we can count them. So these are the countable noun. But uncountable names are the names of materials, liquid, abstract qualities, collection and other things without clear boundaries. इसके बाउंड्री नहीं है, उसे हम अनकाउंटेबल बोलेंगे. फॉर एग्जांपल कॉफी लिक्विड है, लाइफ विदाउट बाउंड्री, वेदर विदाउट बाउंड्री, इसे हम अनकाउंटेबल बोलेंगे. काउंटेबल नाउन्स हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स. जो काउंटेबल है ना, उसका प्लूरल फॉर्म होगा. फॉर एग्जांपल डॉक्टर का डॉक्टर्स हुआ, डोर का डोर्स हुआ, आर का आर्स हुआ. But uncountable, they don't have plural forms. We cannot say waters, we cannot say golds, we cannot say woods. We can only say water, gold, wood. These are the uncountable noun. The same way, countable noun can be preceded by an article, a doctor, a carpet, an hour. But uncountable noun cannot be preceded by article a or an. A water, a gold, a wood, ऐसा नहीं होगा. Countable, they can be preceded by numbers, 2 doctors, 5 chapters, or 5 carpets, 3 hours. Uncountable nouns cannot be preceded by any numbers. उनके आगे हम numerical value नहीं दे सकते. So these are the basic difference between the countable nouns and uncountable nouns. Now let's move forward with the another type of noun that is known as the material noun. A material noun is a noun given to the name of material or a substance or an ingredient of which things are made. किसी चीज को किसी से बनाया गया है, उसको material noun बोलते हैं. For example, iron, copper, wood, steel, milk, wheat, gold, silver, sugar. These are the material noun. इनमें से कुछ चीज बनेगी या इसका उपयोग किसी चीज को बनाने के लिए उपयोग इसका होगा. So these are known as the material noun. For example, we use cotton from a local farm in our t-shirt. So here cotton is a material noun. My mother purchased a gold ring for me. So here gold is a material noun. Dhruvika drinks milk every night. So here milk is a material noun. Water boils at 100 degrees Celsius temperature. So water is a material noun. और हमने जैसे बताया सभी material noun, cotton है, gold है, milk है, water है, they cannot be counted. So they also belong to the category of uncountable noun. So we have seen 3 nouns today: countable, uncountable and material nouns. In the next video, we are going to look at the last 2 types of noun, that is collective nouns and compound nouns. Till then, we again request you to like, share and subscribe our YouTube channel, Aksar Education Hub, for such informative videos. Thank you very much. We'll see you soon.